हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ACME कॉमर्स अकेडमी। आज हम कवर करने वाले SP स्टैंडर्ड 12th फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो आइए अभी समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which gets preferential treatment as far as payment of dividend and repayment of capital is concerned. जब भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो भी बैलेंस है, इट विल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ लेट अस कम टू फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? नाउ सबसे पहला फीचर जो है वो है इक्विटी शेयर्स फॉर्म्स परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर क्या है हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल फॉर द, क्योंकि इक्विटी शेयर्स है वो इररिडीमेबल शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स, मींस नॉन रिफंडेबल। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी विल नेवर रीपे अमाउंट विच बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाउएवर लिक्विडिटी है, इक्विटी शेयर होल्डर फील्स he has made good profit, उसको अच्छा एप्रिसिएशन मिला है, so he can sell the shares in the market, in the secondary market through stock exchange, and he can take his money. But company is never going to repay the capital of equity shares. Therefore, equity share capital is a permanent capital for the company. It is repayable only in case of liquidation of the company. जब कंपनी का liquidation होगा, कंपनी डिसॉल्व हो रही है, only at that time, after payment of all third party liabilities, preference share capital will be paid along with outstanding dividend, and if then anything is remaining, जो residual amount, जो भी balance amount बचता है, if it is remaining, then it will be paid to equity shares. Otherwise, amount which is given by equity shareholder or contributed by equity shareholder as a capital is not repayable during the lifetime of the company. So I hope first point आपको समझ में आया, that is permanent capital. Second है fluctuating dividend. See, in case of preference shares, dividend is fixed. Like for example, if company has issued 9% preference shares, which means dividend will be paid at the rate of 9%. So they will get dividend at a fixed rate. But equity shareholder का ऐसा नहीं है. If company performs well, company को ज़्यादा profit हुई, company has made handsome profit, in that case dividend will be paid at a higher rate. But in case company has not earned sufficient profit, company may give dividend at a lower rate. If company is into losses, company may not pay dividend at all. So it is not mandatory. ये कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है डिविडेंड पे करना। अगर लॉस होगा कंपनी डिविडेंड नहीं भी पे करेगी. So dividend is always paid at a fluctuating rate. Higher the profit, higher will be the dividend, and lower the profit, lower will be the dividend. No profit, no dividend. Clear? Now third point हम लेते हैं. It is rights. What are the rights? Now equity shareholder enjoys certain rights. Now what are those rights? Mainly there are 4 rights. वो rights है: right to vote, right to share the profit, right to inspect the books, and right to transfer the shares. So first a right to vote. So it is the basic right of equity shareholder through which they elect director, they can remove directors, they can appoint auditors, they can remove auditors, they can make alteration in the articles and memorandum of association. So that is right to vote. So every shareholder or every equity shareholder have a right to vote at the meeting. Second है right to share in the profit. Now ये भी एक important right है, right to share in the profit. जब कंपनी को प्रॉफिट होती है, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. नाउ सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे विल गेट प्रॉफिट व्हेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट, राइट? सो दे विल गेट डिविडेंड. थर्ड इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. कंपनी की जो स्टेट्यूटरी बुक्स होती है, स्टेट्यूटरी मीन्स बुक्स विच आर मैंडेटरी, कंपल्सरी कंपनी को मेंटेन करनी है. Now what are those books? These are
register of members, register of debenture holders, register of charges, register of deposits. तो ये सारे रजिस्टर्स उनको मेंटेन करने हैं और ये रजिस्टर्स शेयर होल्डर्स कैन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन इंस्पेक्ट एनी टाइम. एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट इज राइट टू ट्रांसफर द शेयर. जो शेयर्स हमने परचेज किए कंपनी के, इफ आई वांट आई कैन ट्रांसफर द शेयर्स एनी टाइम. That is in case of public company. Private company के shares are not transferable, but public company shares are easily transferable. So this is also one of the right which belongs to equity shareholder. Now this transfer will be made as per the provision which is made in the articles of. So I hope पहले 3 point clear हुए. First point क्या था हमारा? Permanent capital. Second the fluctuating dividend, and third the rights. Fourth point है हमारा no preferential right. इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलती लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है किसके बारे में? रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. ये दो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं. बट दिस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कंट्रोलिंग पावर. Now, shareholders are the real owners of the company because they contribute capital. So, they are the real masters of the company because they enjoy exclusive voting rights. They enjoy normal voting rights. Anytime they can exercise their voting right through proxies. Now, what do you mean by proxy? Proxy means if a member is unable to attend the meeting, he can send somebody else on his behalf. और किसी पर्सन को who is not a member of the company, he can send such person to attend the meeting so that he will get the knowledge कि भाई मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको पता चलेगा. However, proxy is not allowed to vote in the meeting. उसको allowed नहीं है वोट करना. So by exercising voting power, they can always participate in the management of the company. Like they can appoint directors, they can approve the rate of dividend, because dividend is recommended by director, but it is approved by whom? By the shareholders, equity shareholders. Apart from that, they can appoint directors, they can remove directors, they can appoint auditors, they can remove auditors. So equity shareholders are the real owners and they control the company through whom? Board of directors. Because since equity shareholders are scattered, equity shareholders सब एक जगह पे नहीं होते. They are in different cities and they have got their own job. उनका खुद का काम होता है. So they don't have time to participate in the management of the company. So to look after the company, वो किसको अपॉइंट करते हैं? Their representative, जिनको हम बोलते हैं board of director. So that is called that is your fifth point, that is controlling power. Next point हमारा जो है वो risk. Equity shareholder bears the maximum risk in the company. Actually, they are called as shock absorber. अभी आपको तो पता होगा shock absorber क्या होता है. Shock को जो absorb करता है. So whenever company is in trouble or company is making losses, who will bear the losses? Equity shareholders. So equity shareholders bear maximum risk in the company. They are called as shock absorber. Now suppose if the company's earning falls, company की income कम हो गई, company में give lower rate of dividend, और अगर कंपनी लॉस में, कंपनी आपको डिविडेंड ही नहीं देगी, एंड कंपनीज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स में फॉल डाउन. सो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा. अब ये सारा लॉस कौन बेयर करेंगे? इक्विटी शेयर. सो दे आर द मेन रिस्क टेकर्स ऑफ द बिजनेस. क्लियर. रिस्क का पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेसिडुअल क्लेमेंट. रेसिडुअल क्लेमेंट अगर हम सीधी सादी हिंदी भाषा में बात करें तो घर का आदमी. देखिए आपके घर में भी कभी ना कभी गेस्ट आते होंगे. जब गेस्ट आते हैं तो पहले खाना हम किसको खिलाते हैं? गेस्ट को ना. हम गेस्ट को खाना खिलाते हैं और उसके बाद में जो बचेगा वो घर वाले खाना खाते हैं. सेम वे यहाँ पर भी वैसे ही. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स एंड रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ द अर्निंग आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, टैक्सेस एक्सेट्रा. जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस है, कंपनी की लायबिलिटीज है, कंपनी को जो टैक्सेस पे करने, ये सारा पे करने के बाद उसके बाद में आपका
प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह सब कुछ पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के को डिविडेंड पे करने के बाद जो भी बचता है वो पूरा का पूरा अमाउंट इसको डिस्ट्रीब्यूट होता है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ रेसिडुअल क्लेमेंट। सो आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस टैक्सेस जो भी अमाउंट बचेगी दैट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नो चार्जेस ऑन एसेट। नाउ equity shares are unsecured, so we don't have to give any security to the shareholders. हम shareholder को कोई security नहीं देते कि your money is safe with us. If company is performing well, company अच्छा perform करती है, then equity shareholder they will earn money, they will earn profit, dividend मिलेगा उनको. But यहाँ पे क्या है? This is unsecured. Equity shares क्या है? Unsecured security है. तो इसके अगेंस्ट में हम शेयर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी देते नहीं है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। चार्ज मतलब लोड या बर्डन। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इज अ सिक्योर्ड सिक्योरिटी, तो व्हेन वी इशू डिबेंचर वी विल हैव टू गिव सम सिक्योरिटी टू द डिबेंचर होल्डर एज अ गारंटी फॉर रीपेमेंट। बट या इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसी कोई गारंटी मिलती नहीं है। सो इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज बोनस इशू। नाउ व्हाट इज बोनस इशू? व्हेन कंपनी इज मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, बिकॉज सी अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या इन्वेस्टर्स है and company wants to maintain good relation with the shareholders. So when company is making excessive profit, what company will do? Company will capitalize its profit. Profit को क्या करेंगे? Capitalize करेंगे, which means they will convert profit into capital by issuing bonus shares to the fully paid bonus shares to the equity shareholder absolutely free of charge. उसके लिए shareholders को कुछ भी pay नहीं करना है. So see, bonus shares are issued as a gift to equity shareholders. These shares are issued free of cost to existing equity shareholders in proportion to their holding. Like company ने declare किया कि we will give bonus shares in proportion of 2:1. Means on every 2 shares, equity shareholder will get 1 share free. For example, मेरे पास अगर 100 shares है, तो मुझे कितने shares free में मिलेंगे? 50 shares मुझे free में मिलेंगे, right? And these shares are fully paid up. मतलब इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी पे नहीं करना है। नाउ दीज शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट विच इज सेट असाइड। हर साल क्या होता है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम साइड में रखते हैं एज अ सेविंग। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, घर में भी हम जितना भी पैसा अर्न करते हैं तो सम पार्ट इज सेट असाइड, हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। इट इज सेविंग फॉर अस। सेम वे कंपनी भी क्या करती है, सेव करती है, एंड दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू नॉर्मली रिजर्व फंड अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट, एंड लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स वी कैन यूटिलाइज दिस, राइट। सो बोनस इशू, उसके बाद में राइट इशू। नाउ व्हाट इज राइट इशू? व्हेन कंपनी नीड्स फर्दर कैपिटल, कंपनी को और कैपिटल चाहिए, कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स, कंपनी विल इशू राइट शेयर्स। अब व्हाट इज राइट शेयर्स? सी, इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट, उनको ये अधिकार दिया गया कि whenever company is issuing further capital, company is issuing capital through right issue, first they will offer it to existing equity shareholder in proportion of their holding. सबसे पहले किसको ऑफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। इफ इक्विटी शेयर होल्डर doesn't want to buy, exercise the option, उनको ऑप्शन देते हैं कि if you want you can buy security of the company, you can buy shares of the company at so and so rate, predetermined rate. अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बाई करना है तो वो बाई करेंगे, अगर नहीं बाई करना है देन दिस शेयर्स कैन बी सोल्ड टू थर्ड पार्टी और आउटसाइडर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट इशू। सो इन राइट इशू सबसे पहले किसका राइट है? इक्विटी शेयर होल्डर का। सो व्हेनेवर कंपनी इज issuing shares through right issue, first they will offer it to the existing equity shareholder in proportion of their holding, and if equity shareholder is not interested in buying the shares of the company, in that case they may offer to the out. तो ये है हमारा right issue. Next point हमारा जो है वो है face value. Now what is face value? Face value means
the value which is mentioned on the share certificate is called as face value. Now normally face value क्या होता है 10 rupees. In case of equity shares it is normally 10 per share, or sometimes it can be even 2 rupees per share or 1 rupees per share, but normally it is 10 rupees per share. It is called as face value, which is mentioned on the face of the share certificate. Next point है हमारा market value. Now what is market value? See, depending on the performance of the company, the market value क्या होगी, ऊपर नीचे होती है, depending on the demand and supply factor. अगर कोई सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिमांड कम होती है तो मार्केट वैल्यू कम होगी. लाइक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छी प्रॉफिट की है, बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं, इन दैट केस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. बट इफ कंपनी इज मेकिंग लॉस, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है लास्ट 1 or 2 years, कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरेगी. सो मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो सी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर fluctuates according to demand and supply of these shares. The demand and supply of equity depend on profit earned and dividend declared. कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग, उसके ऊपर डिपेंड होता है. सो मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. फेस वैल्यू आपकी सेम रहेगी बट मार्केट वैल्यू विल कीप्स ऑन. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैपिटल एप्रिसिएशन. सी व्हेन कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन दैट केस मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल गो अप. मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो बेनिफिट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का. तो उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू में एप्रिसिएशन आएगा, मीन्स उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. राइट? सो देयर इज ऑल्सो कैपिटल एप्रिसिएशन. कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी एक फीचर है. एंड इसके साथ हमारे इक्विटी शेयर्स के फीचर हुए कंप्लीट. आई होप सारे के सारे फीचर्स आपको समझ में आए होंगे. सबसे पहला फीचर हमने क्या किया था? फर्स्ट फीचर हमारा था परमानेंट कैपिटल. इट इज़ नॉट रीपेएबल इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. हायर द प्रॉफिट, हायर द डिविडेंड. लोअर द प्रॉफिट, लोअर द डिविडेंड. एंड इफ नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड. उसके बाद में हमने उसके राइट्स के बारे में बात की. राइट टू वोट, then right to receive, right to share in the profit, right to inspect the books and right to transfer the shares. उसके बाद में the equity shareholder do not enjoy any preferential right like preference shareholders, right? उसके बाद में हमने बात की controlling power के बारे में. They are the real owners of the company. They control the company by voting in the general meeting, and they appoint board of directors to run the company. उसके बाद में हमने देखा रिस्क. दे आर द मैक्सिमम रिस्क बेरर. उसके बाद में हमने देखा रेसिडुअल क्लेमेंट. ही इज़ द लास्ट वन टू रिसीव द बेनिफिट्स रिलेटेड टू शेयर्स. उसके बाद में इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स. सो इट इज़ अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, सो कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है एसेट के अगेंस्ट में. देन बोनस इश्यू भी हमने अभी पढ़ा. बोनस इश्यू, राइट इश्यू. उसके बाद में फेस वैल्यू, market value which depends on the demand and supply factor. Then लास्ट में हमने पढ़ा कैपिटल एप्रिसिएशन. सो आई होप आप लोगों को फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर समझ में आए होंगे. राइट? इफ यू लाइक द वीडियो then please like it, share it and subscribe it with your friends. Thank you.